अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व ax square plus by square is equal to 1 at any time t if the polar angle is theta is equal to ct square. So we have to find the radial and transverse component of velocity. अब हमारे पास थीटा गिवन है विच इज ct square, और हमारे पास डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा 2ct, and then d square theta our dt square will become 2c. Also we have equation of curve which is ax square plus by square is equal to 1. Now we have to change it in the polar coordinates. So x is equal to r cos theta or y is equal to r sin theta. So put these values in this equation. This will become a r square cos square theta plus b r square sin square theta is equal to 1. r square अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो दिस विल बिकम a cos square theta plus b sin square theta is equal to 1. So r square can be written as 1 over a cos square theta plus b sin square theta. Taking square root on both sides, it will become 1 over square root a cos square theta plus b sin square theta, which can be in fact written as a cos square theta plus b sin square theta power minus 1 by 2. Now as we know that the radial component of velocity is dr by dt, so we have to take the derivative with respect to t. So we have to take the derivative of r with respect to t. So this is equal to d by dt and then a cos square theta plus b sin square theta power minus 1 by 2. So taking the derivative is minus 1 by 2 a cos square theta plus b sin square theta. So minus 1 by 2 minus 1. अब इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विच इज़ a एज इट इज़, और cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और थीटा विद रिस्पेक्ट टू t d थीटा बाई डी टी प्लस b एज इट इज़ 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज d थीटा बाई डी टी. So we can write this term as 1 over 2 a cos square theta plus b sin square theta minus 3 by 2. इस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम पॉजिटिव a और b टर्म नेगेटिव हो जाएगी. 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा बाई डी टी कॉमन आ जाएगा. 2 sin theta cos theta d theta by dt is common. Moreover, we can write this as a cos square theta plus b sin squared theta minus 3 by 2 a minus b, और 2 sin theta cos theta को हम लिख सकते हैं sin 2 theta d theta by dt. इस टर्म को हम लिख सकते हैं a माइनस बी साइन 2 थीटा, और d थीटा पर dt हमने कंप्यूट किया था पहले विच इज़ 2ct. सो दिस इज 2ct डिवाइड बाय 2
a cos square theta plus b sine square theta 3 by 2. This will cancel out. So we have the radial component of velocity, which is dr by dt. It is equal to ct a minus b sine of 2 theta divided by a cos square theta plus b sine square theta power 3 by 2. So this is the radial component of velocity. Transverse component of velocity is equal to r d theta by dt. We know what is r, which is 1 over a cos square theta plus b sine square theta square root 1 over a cos square theta plus b sine square theta square root, and d theta by dt is also known, which is 2ct. So 2ct. So this is the transverse component of velocity. Thank you very much.